Now, now, a sample partially project plan, overall goal of the project. इसमें जो आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिकल लैब है, सिंपली आपको एक प्रोजेक्ट लाइक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, या आपसे कोई ईआरडी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कहा जाएगा, या आपको डेटा फ्लो डीएफडी ड्रॉ करना है, और कॉन्टेक्स्ट फ्लो डायग्राम. देन वी विल स्टार्ट. द proposed software system should be able to. First one is read the structured data available in the Excel file or store it in a database system, or you can say validate data. तो एक बार इनको रीड करना. Then next one is primary data. Then delivery deadlines. Deadlines भी आपको मिलती है कि आपको ने जो प्रोजेक्ट बनाया है, जो भी डायग्राम शो कर रहे हो, और यू कैन से एक इफेक्टिवली एक मॉडल रेडी कर रहे हो आप जिस ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट का, उसको कब तक आप सबमिट करा दोगे. दिस इज फॉर डेडलाइन. नाउ, project plan. First one is objectives. Second one is specific product to be delivered. आपको कब delivered, objective क्या है. Second one is आपको deliver कब करना है, deadlines क्या है. नेक्स्ट वन इज एक्टिविटीज एंड माइलस्टोन. इट मीन्स आपने क्या क्या उसमें एक्टिविटीज कराई है, क्या क्या आप कौन कौन से प्रोसेस को एनालाइज कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, आप एआरडी डायग्राम का फॉलो अप कर रहे हो, या डीएफडी का फॉलो अप कर रहे हो, या कॉन्टेक्स्ट फ्लो डायग्राम फॉलो अप कर रहे हो, वो यहाँ पे शो कराना है आपको. ना द माइलस्टोन. माइलस्टोन मीन्स, एनीबडी हैव एन आइडिया व्हाट इज माइलस्टोन्स? किसी को आइडिया हो? एनीबडी? What is milestone? What is milestone? Guys, किसी को आइडिया हो? मैडम, एक प्रोजेक्ट जो होता है उसको एक ही बार में डिलीवर नहीं कर पाते हैं. मतलब इससे लार्ज प्रोजेक्ट, एक मॉड्यूल को डिलीवर किया, सेकंड मॉड्यूल डिलीवर किया, सो वी अचीव द ओवरऑल गोल इन स्टेप बाय स्टेप. सो इन ईच स्टेप व्हाट वी आर गोइंग टू डिलीवर, दैट इज कॉल्ड द माइलस्टोन. Very good. Or you can say is the status of the project. Milestone is the status of the project. You can say in simple language, obviously. That is called milestones. Now, next one is, अब जो एक्टिविटीज एंड माइलस्टोन्स है, इसमें हमने दो नीड्स को कंप्लीट फुलफिलमेंट किया है, एक्टिविटीज एंड माइलस्टोन्स. नेक्स्ट वन इज resources requirement. You have different types of resources like hardware, software, and tools are required for three different environments like development environment, quality control, deployment. Is this. Now next one is scheduling. आपको अपना जो प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जांपल किसी ने आपको एक सिंपली प्रोजेक्ट दिया, लाइक एक डमी मॉडल बनाना है, या आप एक डमी मॉडल बनाते हो लाइक डीएफडी से, विद द हेल्प ऑफ डीएफडी, और यू कैन से एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम. बट यहाँ पे शेड्यूलिंग का मीनिंग क्या है? जी नेट चार्ट, जो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में भी पढ़ा होगा. इट मीन्स कि कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी मॉडल है, आपको ये तो शो कराना पड़ेगा ना कि हाँ, आपको 6 मंथ का टाइम पीरियड मिला है. आपको फर्स्ट मंथ में आप कितने रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट कर लोगे, जुलाई में आप अपने प्रोजेक्ट को कहाँ तक लेके जाओगे, अगस्त तक आपका कितना इंक्लूड होगा, सितंबर तक आप कितना कर पाओगे, एंड सो ऑन, अक्टूबर नवंबर, और नवंबर तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए. तो ये हम किस चीज के लिए रिक्वायर करते हैं? शेड्यूलिंग के लिए. आपको शेड्यूल करना पड़ेगा कि हम कब तक उसको फुलफिलमेंट कर पाएंगे. ओके, प्लीज रीड दिस फॉर जस्ट फॉर 2 minutes. Just wait for 2 minutes.
Sorry for disturbing. Sorry for interrupting. Acha, am I audible? Yes, ma'am. ओके बच्चा, प्रॉब्लम ये है कि आज ही मेरी दो क्लासेज है, दो लेक्चर है और सेम टाइमिंग पे, तो उनको एडजस्ट करना है बस। सॉरी, जस्ट सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। ओके बच्चा, अग्निश, नाउ we have to understand scheduling. A very elementary GNet chart for timeline chart for the development plan is given below. The plan explains the task versus time they will take to complete. For example, June, July, August, whatever time you will be given. Next one is working with requirement. Now tell me, what is the full form of SRS? Tell me, what is the full form of SRS? Ma'am, software requirement specification. Obviously, obviously, very good. Now, what is feasibility study? The term, what is feasibility study? Ma'am, whether it will work Or or not? not. Obviously, obviously, very good. Now, working with requirements, cost estimation, creation of SRS, traceability, or you can say ambiguous requirement, है ना? Ambiguous or non-ambiguous. Define the term ambiguous. What is ambiguous requirement? Ma'am, a word does not have double meaning. Obviously, oh, very good. And next one is creation of models. Now, what is feasibility report? We have already discussed. Now, introduction. Include the project background and report layout here. Second one is terms of reference, or you can say in simply words, we have to define first of all feasibility study, then SRS, then SGD, whatever you will give a project. Now existing system include the result of fact finding, working of the current system and the problems in the current system. Now system requirement, proposed system, development plan, economic feasibility and other feasibility like regarding cost estimation, cost money. And now economic, or you can say different types of feasibility is depend on simply on parameters. And now background of the project, the basic requirement of the user and working of the systems are but the excuse is just for 5 minutes you have to study. Please, this introduction, background of the project, now report layout. Please read this for just for 5 minutes. हेलो गाइस, जो भी टर्म्स मैंने अभी चैट बॉक्स में आपको शेयर किया है, इनको यू हैव 15 मिनट्स एंड देन स्टार्ट करें।
आप यू हैव 15 मिनट्स एंड जो भी वर्ड्स है SRS SDD ERD डेटा फ्लो डायग्राम, इन सबको एक बार 15 मिनट के लिए इनको एक बार रीड करें.
Hello guys, am I audible? Sorry for Yes, ma'am. sorry for late. अर्लियर आई टोल्ड क्योंकि दो क्लासेज हो रही है आज एक्चुअली 9 to 11 और 9 to 12 आप लोगों के साथ, तो उनको मैंने डिफरेंट टाइमिंग्स दे दिया है। अब स्टार्ट करते हैं अच्छे से। ओके, मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे, ईआरडी, डेटा फ्लो डायग्राम, एसआरएस, एसजीडी। नाउ टेल मी फर्स्टली व्हाट इज एसआरएस, क्योंकि हमें वहीं से स्टार्ट करना है। अपना जो प्रैक्टिकल लैब है, सिंपली कोई प्रोग्रामिंग कोई लैंग्वेज नहीं होगी, सिंपली आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड होगा जिसको आपको विद द हेल्प ऑफ ईआरडी और विद द हेल्प ऑफ डेटा फ्लो डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्लो डायग्राम से ही आपको रिप्रेजेंट करना है। तो नाउ व्हाट इज एसआरएस, टेल मी फुल एक्सप्लेनेशन, नोट की सिंपली आप फुल फॉर्म बता दो। एक्सप्लेन एसआरएस। In previous class, we have already studied the term. Software requirement specification. Whenever we are going to implement any software, first we collect the requirement of the software, what is required for software to do. So, and whatever the requirement is there is a document that is called the software requirement specification. Obviously, obviously, very good. You mean to say requirement collection, requirement gathering, or like Yeah, manav, abhi a document that describe the requirement, expectation, and the standards of a software project, or you can say collection of requirement, gathering of requirement. It means requirements को इकट्ठा करना, मतलब कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको कलेक्ट करना, जिस भी टाइप की रिक्वायरमेंट है। Is it suitable for your project or not, depends on the quality, depends on her opinion। हमें सिर्फ क्या करना है, कलेक्ट करना है एसआरएस में। ओके, सेकंड वन इज एसडीडी। नाउ टेल एक्सप्लेन द टर्म एसडीडी। software design document. वेट हरि नारायण पांडे, वेट बेटा, एक ही यहाँ पे आंसर कर रहा है, एक ही पर्सन। बाकी बच्चे आरती, आर्या, अभिषेक, व्हाट अबाउट अदर्स? एसडीडी, Hello. यस श्रद्धा। Yes, ma'am. Ma'am, SDD stands for Software Design Document, and it mainly relates with the functionality of the software. Also, it is mainly focused on the architecture part of the software. Obviously, very good. You can say design of the software, है ना, like functionality, functional requirement, non-functional requirement, or we can simply say design of software, design of product, design of project. I think this is very easy, software design description. Now, okay, MD मैम ने कुछ शेयर किया है क्या? बेटा क्वेश्चन शेयर किए थे मैंने, 4 क्वेश्चन, SRS, SDD, and ERD, and data flow diagram. Now, third term is ERD diagram. Who will give answer? Proper explanation. Ma'am, Yes. ma'am, But ERD stand. Shraddha nahi. Anybody else? Ma'am, actually, ERD stands for Entity Relationship Diagram. It is a visual representation how entities Very like good. such as people, object, concepts interact with the database that is based on the ERS. Obviously, obviously. But if this name include ER model, what E stands for? Entity. Stands for Entities. entity. Very good, entity. And now R stands for? Relationships. Relationship. Relationship. Obviously. And now entity relationship diagram. Or like what is an entity? Ma'am, real world It's object. like a table. One by one. Any Okay. an MD, object. MD आप It आंसर can be any करो। object. Obviously, object. For Entity is any example. object, ma'am, which has independent existence, ma'am. Any Okay, object very which good. has independent existence. Ma'am, it's a Okay, real very world object. रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, वेरी गुड। जिसने भी बोला ना रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, वेरी गुड, Yes, जिसको हम ma'am. रियल वर्ल्ड में आइडेंटिफाई कर सके। फॉर एग्जाम्पल, सभी के पास पेन होगा या पेपर होगा या फोन होगा, आई थिंक। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 2 ब्लू पेन है, तो हम उन दोनों ब्लू पेन्स को एंटिटी बोलेंगे। इज दिस करेक्ट और नॉट? Yes, ma'am. ओके, बट हम वी हैव दो पेन है ना अपने पास, वी हैव 2 पेन्स और सेम कलर ब्लू, तो हम उनको एंटिटी
आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा जो पेन है वो डिफरेंट है. इफ यू हैव ब्लैक एंड ब्लू पेन और हम उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई दो पेन है, एक का कलर ब्लू है, एक का ब्लैक है. उनकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो कलर से हम उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं. मतलब एक जो पेन है वो आपको एनालाइज करा रहा है कि मेरा जो कलर है वो ब्लैक है और जो दूसरा पेन है उसका कलर क्या है, ब्लू. देन वो एंटिटी बनता है. अगर उनका सेम कलर है, सेम रिप्रेजेंटेशन, तो हम उनको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे. जैसा कि श्रद्धा ने कहा ना अभी, रियल वर्ल्ड एंटिटी, मतलब जिस, फॉर एग्जाम्पल अब हम सभी है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर हियर 99 इंक्लूडिंग मी. तो हम सभी को सभी डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन है. और किससे हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ आधार कार्ड, है ना. सभी के पास डिफरेंट डिफरेंट आधार कार्ड है ऑब्वियसली. तो ये क्या होता है आपका एंटिटी. ठीक है, ये क्या है आपका एंटिटी. नाउ डिफरेंट इज रिलेशनशिप. ये तो आपको ऑलरेडी अवेयर हो इस चीज से. नाउ एट्रीब्यूट, डिफाइन द टर्म एट्रीब्यूट. Ma'am, attribute is the attribute is the property of the entity. ओके, प्लीज रिपीट बच्चा, प्लीज रिपीट. सॉरी. Ma'am, attribute is the properties or features of an entity. Obviously, very good. Features. Now, okay. Now, screen is visible or no? Tell me. Now, Yes, ma'am. visible. okay. अभी आते हैं हम अपने next one is. Ma'am, actually in this chapter, practically what we have to do? Just wait for 1 second. Yes, please repeat, bacha. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, actually in this chapter, software engineering, practically what we have to do? Like you said, we have to do the ER diagram. Wait. Obviously, ER yeah, with the help of ER diagram, with the like help which of software we are using to do that one? simply simple just question like data flow diagram, context flow diagram, entity relationship diagram. Just wait for 10 to 15 minutes. मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू ये चीजें समझाऊंगी. बस जस्ट आपको कोई भी क्वेश्चन उसको सोल्व करना है, बट उसका कंसेप्ट तो क्लियर होना चाहिए ना. अभी हम क्वेश्चन करेंगे एक्सपेरिमेंट. यहाँ पे जो प्रोग्राम है वो नहीं, प्रोग्राम हम- इज जस्ट सिंप्लीफिकेशन. हम उसमें प्रोग्रामिंग लिखेंगे. नहीं, यहाँ पे कोई प्रोग्रामिंग नहीं है. ऑलरेडी क्लास स्टार्ट से ही मैंने आपको मेंशन किया था यहाँ पे लाइक C++, जावा, ऐसी कोई प्रोग्रामिंग नहीं है. आपको सिंपली EID डायग्राम ड्रॉ करने हैं, डेटा फ्लो डायग्राम ड्रॉ करने हैं. कोई प्रोग्रामिंग नहीं है यहाँ पे आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लैब में. Ma'am, I can see that most of the things are related to database management system. Obviously, yes. Okay, now the different term is data dictionary. Simply data dictionary. What do you mean by data dictionary? Like data about data, है ना. In different kinds of meaning, same kinds of meaning like client, Excel data files, verify usernames and password, data validation, generate internal reports. Like अब इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तब इजीली समझ आएगा. नाउ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. अब इसमें क्या क्या इंक्लूड है? डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैरामीटर, different kinds of things we have to include. Normally IEEE standard is follow. Obviously, a typical format of SRS is as follow: table of content. Like first one is purpose, second one is scope, and third one is definition. Next one is product and its foundation, functions, benefits, goals, and next one is overall description. Product descriptions, product functioning, this all kind of software requirement specification जो भी software requirement में included है, like interface. Obviously, okay, tell me what is an interface? Who will give answer? What is an interface? Ma'am, interface is a connectivity between user and developer. Obviously, interface is the medium. Obviously, अगर हम जहाँ पे मैं आप लोगों के साथ हम क्लास काउंसलिंग कर रहे हैं, हम अपने क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, बट कौन से मीडियम के थ्रू? गूगल मीट के थ्रू. तो ये क्या हुआ आपका इंटरफेस हुआ, है ना. कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, जैसा कि श्रद्धा ने आपने आंसर किया. वेरी गुड बच्चा. नाउ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, यूजर रिक्वायरमेंट, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट. इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट्स. किस टाइप की आपकी रिक्वायरमेंट है.
जो कि सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग हो, हार्डवेयर के रिगार्डिंग हो, या सिंटैक्स के रिगार्डिंग हो, सिमेंटिक्स के रिगार्डिंग हो, ये ओवरऑल डिपेंड करेगा. नाउ basic processing action of the system, input output formats, instruction for security, result of fact finding, data model, functional model, process specification. Now अभी आप 5 मिनट के लिए ये ट्राई करें एक बार इंट्रोडक्शन. जो भी SRS है, अभी तक आप हमने 2 और 3 लाइन्स में ही SR को आई थिंक रीड किया कि कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ रिक्वायरमेंट, और यू कैन से गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट. बट जब हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं, ऐसा अगर आपका प्रोग्राम, यू कैन प्रोग्राम ही बोलेंगे ऑब्वियसली अगर हम प्रैक्टिकल पढ़ रहे हैं तो प्रोग्राम, और यू कैन से क्वेश्चंस. इट मीन्स अगर आपके पास, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ यहाँ पे, आपको एक सिंपली एक क्वेश्चन है कि आपको लाइब्रेरी का क्या बनाना है, सिंपली SRS बनाना है. अभी हमें ना तो हमें ERD डायग्राम बनाना है, ना हमें डेटा फ्लो डायग्राम बनाना है, हमें एक लाइब्रेरी का क्या बनाना है, SRS. सिंपली मेक ए SRS ऑफ लाइब्रेरी. आपको लाइब्रेरी का SRS बनाना है. यू हैव 10 मिनट्स. ठीक है, और आप मुझे बताओगे कि उसका पर्पस क्या है लाइब्रेरी का, उसका स्कोप क्या है, डेफिनेशंस क्या है. तो नाउ व्हाट इज क्वेश्चन, लाइब्रेरी का आपको SRS ड्रॉ करना है. ठीक है. Ma'am, यस. yeah, could you please explain in English? Means we ओके don't know ओके English. ओके ओके अनुराग. Yeah, okay, thank you, ma'am. मेक ए मेक ए SRS, make SRS for library. You have only 10 minutes. In this SRS, you have to identify process, product, definition, scope, जो whatever you have to read. जो भी अभी तक हमने रीड किया है यहाँ पे, draw a, make a SRS for library. You have only 10 minutes. Is this okay? मैम ओनली लाइब्रेरी और फुल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम. You can say library management system, it's included ना library, तो obviously वो सारा include हो गया management system. Yes. Sorry, okay, मैं दोबारा से लिख लेती हूँ. Again, library, only SRS, library management. You have to define all the terms, including functions, product, process, all the terms. You have only 10 minutes. Exactly 9:55 आपको आंसर देना है. Please make SRS for library management system. Thank you. You have to define all the steps, all of the steps.
Can we draw a simply diagram like for library management? Like there is a user, and after that user, they have a login ID for that user. Obviously, you have to Then write requirements, SRS, na software requirement specification. You have to draw functional, non-functional requirements, login, ये सब. a functional requirement and non-functional requirement. Like in Obviously, pen and paper, using pen and paper, we have to draw that ER diagram. but now we have to only draw SRS. नहीं मैम Second one is मुझे Ma'am, SDD, and now third one is ERD. Firstly, आपको सिर्फ SRS draw करना है. तो मेरे कहने का मतलब है एसआरएस जो ड्रॉ करेंगे, मैं स्टार्टिंग में थोड़ा लेट में ज्वाइन की थी, तो Okay. मेरा कंसर्न ये है कि जो हम करेंगे ना, मतलब कहाँ अभी किस में करेंगे, एक्सेल में, वर्ड में या जावा में, किस में करेंगे? अभी ये सिर्फ आपको सिंपली वर्ड में करना है, नॉट इन एक्सेल, नॉट इन जावा, नॉट इन सी प्लस प्लस, ओनली वर्ड में करना है. अच्छा, ओनली वर्ड वर्ड. में उसकी फंक्शनल हाँ, डायग्राम ड्रॉ कर, ओके बस वर्ड में. ओके ठीक है मैम, थैंक यू। ओके. Okay, anybody who will give answer, who have draw लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम? किसी ने बनाया अभी तक SRS और लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम? किसी का बना SRS?
Who will you answer? Anybody? Madam, SRS will be having the four component basically. So first we will introduce what the SRS is made for. So basically we are in introduction part, we will write it down why we are making this library management system. What is Okay. the purpose of this? Yes, What we are purpose. going to do. Yeah. Okay. So So what is the in the purpose for library management system? in order to manage the various stakeholder to the library and Okay. how to issue the book, how to Obviously. retrieve the book, and if how we are going to add the books and all. Yeah. So this is the part on the Obviously introduction. specified time period also. Yeah. Right, ma'am. Okay. So First once we create first we create a login ID for the user now, because if you don't have any login ID, anyone can using Obviously, very good, anyone can. very good. This so also include. so that is comes into second part where we are defining the product. So how this product will look like. Okay. So then we will define what is the product perspective. We will define the product function, how this is going to function for the users, function for the administrator, and if there is some any external stakeholders is also there. So we are going to define all those things. So how the login will be done, what data we are going to manage within that. So what are the different type of data we are going to manage. So all things will be divided under the product functionality and features. Obviously, very good. Now you have to see this software engineering practical. Now first experiment number one is देखिए. Now see to find the requirement specification, just जो हमने अभी किया library management system के लिए SRS. You this kind of program we will use in software engineering practical. First one is to find the requirement specification, both functional and non-functional of a given problem. So what's the problem? What's the experiment? लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम. ओके. तो हमें क्या करना था प्रोसीजर. आप प्रैक्टिकल फाइल की हेल्प ले सकते हो जो कि इजीली अवेलेबल है ऑनलाइन मोड में. तो स्टेप नंबर वन इज इंट्रोडक्शन प्रोसीजर जो कि फर्स्ट है. पर्पस आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट whose software requirement are specified in this document. Now describe the scope of the product. It means आपकी जो लाइब्रेरी है उसका स्कोप क्या है. पर्टिकुलर इफ द SRS यहाँ पे लॉग इन आईडी ऑब्वियसली इंक्लूड होंगे बट अभी हमें जस्ट पर्पस प्रोजेक्ट स्कोप यही बताना है. वो बाद का काम है जो कि हमें करना है ERD डायग्राम में और यू कैन सी डेटा फ्लो डायग्राम में. Now describe the scope of the product that is covered by this SRS, particularly if the SRS describe only part of the system or a single subsystem. Obviously, you can say describe the different types of user that the document is intended, such as developer, project manager, marketing staff, user. Obviously, you can say now next term is project scope. जो भी आपकी लाइब्रेरी है उसका स्कोप क्या है. प्रोवाइड ए short description of the software being specified and its purpose, including relevant benefit. Okay, you have to write. If you have pen or paper, you have to write. First one is what is procedure? Step number one is introduction, purpose and project scope including introduction. Step two is overall description. You have to write. If you have pen or paper, please write. Please write down. Overall description, product perspective. Now product features, user classes, characteristics. Operating environment, design and implementation of constraint. Step number third is system failure, or you can say system feature one, description and priority. And last one is external interface requirement, user interfaces. मतलब SRS में आपको क्या करना है, सिंपली एक इंट्रोडक्शन देना है कि जो स्कोप है, जो प्रोडक्ट है, जो कि सॉफ्टवेयर है, उसको कैसे आप डिफाइन करोगे, बस इतना. नाउ यू हैव टू ड्रॉ सेम SDD. अब आपको ड्रॉ करना है SDD. मेक ए, अभी तो हमने SRS को डिफाइन किया. नाउ मेक ए, अब आपको डिजाइन रेडी करना है इसका. मेक ए SDD. Make a SDD same for library
सेम क्वेश्चन अब आपको ड्रॉ करना है सॉफ्टवेयर डिजाइन डिस्क्रिप्शन. यू हैव ओनली 10 मिनट्स. आपको क्या रेडी करना है? एसडीडी. मैडम जो लास्ट डॉक्यूमेंट आपने दिखाया था, इज इट अवेलेबल विद इन द आवर कोर्स ऑनलाइन, बिकॉज आई कुडंट फाइंड दिस. Yes, ma'am, it is not available on LMS. Okay, Others which topics are topic? available. Which topic? SRS document what you were showing to us. Ma'am, this lab manual itself is not there on LMS. Okay, there. It's only experiment number 1 ना. आप कौन से टॉपिक की बात कर रहे हो? Ma'am, I was saying that as the block 1, block 2 courses are available in PDF form for other Okay, okay, courses okay. like हाँ, that for हाँ, this ये तो course. इंक्लूडेड है ना. SRS, SDD, ERD, DFD, ये तो चारों पोर्शन इंक्लूड है ही है. No, ma'am, I'm not saying that. I'm saying that this lab manual PDF is not available for us. From where you are getting this lab manual PDF? ये That तो would, बच्चा दिस इज ऑनलाइन अवेलेबल है ना. ये आपको यही लैब मैनुअल फॉलो नहीं करनी है. जो आपका ये तो मैंने आपको एक सिंपली एग्जांपल के लिए शो किया है कि आपको एसआरएस कैसे ड्रॉ करना है, एसडीडी कैसे ड्रॉ करना है. जस्ट एन एग्जांपल. आपको इसी से आपको अपने फाइल नहीं बनानी है. ये तो जस्ट So, एक ma'am, एग्जांपल आपको समझाने के लिए. so how we can prepare for exam, because in LMS there is nothing there. Ma'am, for other subjects, it is every block PDF is available, but for this MCS 217, it's not available. ये तो आपका यहाँ पे अवेलेबल है ना ई ज्ञान कोर्स में. मैम MCS, एक्सक्यूज मी मैम, सॉरी फॉर इंटरप्शन. MCS 217 मैम ई ज्ञान कोश पे अवेलेबल है. मैं ग्रुप में सेंड कर दे रहा हूँ PDF. हाँ मैं हाँ ग्रुप में अवेलेबल है बेटा. प्लीज शेयर अवेलेबल यस है. मैम, LMS पे अवेलेबल नहीं है, बट ई ज्ञान कोश पे अवेलेबल था. मैं अभी जस्ट हाँ. ग्रुप में सेंड कर दे रहा हूँ. ई ज्ञान प्लीज शेयर ई ज्ञान कोर्स पे ये अवेलेबल है. आप शेयर कर दे. आपको ये विजिबल होगा यहाँ पे ऑब्वियसली. MCSL यहाँ पे देखिए, MCSL 217 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लैब ये अवेलेबल है. ई ज्ञान कोर्स इग्नू पे अवेलेबल है ये. Okay. हाँ. इज दिस क्लियर? अभी क्लियर हुआ सभी को? Yes, ma'am. हाँ. तो अभी आपको क्या ड्रॉ करना है? एसडीडी. सेम क्वेश्चन, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम. और आपको क्या ड्रॉ करना है? एसडीडी. यू हैव टू ड्रॉ सॉफ्टवेयर डिजाइन डिस्क्रिप्शन. सेम लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम. Hello, Yes. excuse me, ma'am. I'm Deepthi. I've joined later. I want to know regarding lab records. So, was it told before in the session or not? Because simply I have no idea for regarding this. Okay. Actually, we have No. to present our lab records to the RC, right? Seriously, I have no idea about this. Okay, thank you. You have to draw so SDD for library management system. Now you have 10 minutes. You have to draw software design descriptions for software engineering, for library management system. Shraddha, are you making SDD for library management system? Yes, ma'am, I'm trying to make that. Okay, bacha. Please try. Thank you.